Yes, hello, Mr. Aman Gupta. Welcome on Europedia platform, and let's start your thermodynamics snap for your Yes, final JKPSC interview for the post of Assistant Engineer in Public Works Department. yes, So, sir. Aman, Good what do evening. you know about thermodynamics? So thermodynamics is basically thermo means energy, or whether it is in stored form or it is in transition form. And Mhm. dynamics means transformation of energy. That is example, for example, heat will be converted into work, or work will be converted into heat. This is an example of transformation. Hmm. What is first law of thermodynamics? Sir, according to first law basically defines internal energy of system. Internal energy. What is the Yes, difference sir. between internal energy and enthalpy, Aman? सर इंटरनल एनर्जी इज दैट हम कोई भी चीज सिस्टम को हम कोई भी हीट या कुछ भी प्रोवाइड करवाएंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी रेज कर जाएगी। Hmm? बट एंथैल्पी को अगर हम डिफाइन करें तो एंथैल्पी होती है समेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम प्लस इंटरनल एनर्जी यू Hmm? प्लस पीवी। एंथैल्पी होगी हमारी यू प्लस पीवी इंटरनल एनर्जी प्लस multiplication of pressure as well as volume. What that term is representing? PV. Sir, flow work. Flow work. What is that? What is flow work? Sir, minimum work required to flow any flowing substance like fluid. Hmm. Aman, in thermodynamics, we consider, different kind of reversible processes like isothermal, isobaric, Yes, isochoric, yes, sir. adiabatic. So, can you give me some practical example where we can, assume a process like a isochoric, isobaric, or adiabatic process? Sir, practical example. Sir, practically these processes are not possible because they are reversible processes, and reversible processes are. So, suppose there is some practical processes taking place, and how we can approximate, how we can assume that. So, some kind of relevance, the practical relevance I'm asking you related to these processes. Sir, in practical, if we take an example of Otto cycle, in that case, we considered constant volume, that is isochoric process, Hmm? as well as isentropic process, two isochoric processes as well as two isentropic processes. Hmm. What is zeroth law of thermodynamics, Aman? Sir, according to zeroth law of thermodynamics, if a body A is in thermal equilibrium with body B, and Hmm? body B is in equilibrium with body C, and according to zeroth law of thermodynamics, body C will always be equal to in equilibrium with body A. Hmm. So what those ABC bodies are representing? Sir, basically, if we take an example, if A is an industry and Hmm. B is a person, and C if we take as a thermometer. So if that industry produces that thermometer, it is calibrated in that industry. And if Hmm. we take that thermometer to that person, and if he or she measures temperature, and if it is same, and we can say that they are in thermal equilibrium. Aman, what is available energy? Sir, available energy is the maximum available work output before it reaches to dead state. Maximum Hmm. available energy from heat source before it reaches to dead state. Hmm. What is loss of available energy? Sir, loss of available sir unavailable energy और एनर्जी बोल उसको एनर्जी भी बोलेंगे. Are you sure loss of available energy is unavailable energy? सर Unavailable energy is different from available energy. सर loss of available energy, sir work done minus available energy, work output. The loss of available energy will be the maximum work minus actual work. Okay, sir. What is that?
Loss of available energy means loss of work in a particular process. Yes, sir. So loss of work means what? Loss of work means irreversibility. Irreversibility, yes, sir. So loss of available energy is irreversibility. Achha, can you tell me the difference between that? Can you tell me more about that irreversibility? What is the difference between irreversibility and unavailable energy? सर एक्चुअली आता तो था सर, अभी रिकॉल नहीं हो रहा है इसके डिफरेंस. Aman, what do you understand by Carnot theorem? Sir, according to Carnot theorem, if two cycles or any cycle working between two temperature limits, they are between same temperature limits, their efficiency will always be equal. Okay. What is Clausius inequality? Sir, according to Clausius inequality, if we supply heat from low temperature source to high temperature, so there is always need of work output. Without that, it is not possible to transfer heat from low temperature to high temperature. Have you seen some kind of thermos flask? Yes, sir. जो थर्मस बोतल आती है आजकल, जी okay, जी सर. if you purchase any kind of Milton or any other bottle, जी सर. you know, so how we keep hot water in them? Sir, with the help of insulation. So some kind of insulation is there? Yes, sir. Are you sure? There is no insulation actually. Sir, insulation layers are provided so that it keeps hot or cold for around 10 to 12 hours. No such insulation layer, insulating material you are going to find out. Sir, So there are only two metallic layers. Two metallic layers. There is no insulation. So that metallic layer should behave as insulating layer then. Now how a metal can behave as an insulator? Yes. Sir, not sure about that. Actually, there are two metallic layers. Two metallic layers means actually there are two bottles. Yes, sir. One is an inner small bottle in which we are keeping the water. Yes, sir. And another one is an external bottle, the outer bottle, which is a larger one. Okay, yes, sir. Which we can touch. And those two bottles, they are having some very small gap in between them. Yes, sir. And in between that gap, what is there? There is nothing. There is complete vacuum. Vacuum. So, sir, vacuum behaves as insulating material. Vacuum means what? There is no conduction. Because yes, some medium is required. Medium is required. So some medium is required. So conduction is zero. Conduction is not there. Yes, sir. But then also the water is going to cool. Yes, sir. How? Sir, because of radiation. Yes, because of radiation. Good. Yes, sir. Sir, because radiation. So if you are keeping some insulating material, so that is going to increase the weight of the bottle. First thing. Second, yes, it will have some conductivity that may be very low, but it will have some conductivity. If you are keeping the vacuum, it means conductivity is what? Conductivity is even it will be zero because conduction will not be there because there is no medium. Aman. Yes, sir. So, you know, the thermos flask is considered as a kind of isolated system. Yes, sir. And you know, there is some second law of thermodynamics and some statement we mentioned in second law of thermodynamics. The entropy change of an isolated system will always be greater than equal to zero. Yes, sir. So entropy change of the isolated system can never be zero, can never be less than zero. Sir, entropy change for isolated system, sir, never be less than zero because isolated एक्चुअली सर आइसोलेटेड सिस्टम हम यूनिवर्स को अगर आइडियली कंसीडर करेंगे तो वो यूनिवर्स ही आती है. बाकी जो भी सिस्टम आते हैं उसको इंसुलेटेड सिस्टम, बिकॉज कुछ टाइम के बाद उनकी जो हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है उस सिस्टम में से.
तो जो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसकी एंट्रोपी जो है वो जीरो नहीं होगी कभी भी, ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगी। Aman, what is thermometric property? How a thermocouple works? सर थर्मोकपल बेसिकली टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस। हम्म, ठीक है, सर कैसे काम करता है वो? सर जैसे हम अपने रेफ्रिजरेटर की बात कर लें तो उसमें एक थर्मोकपल होता है। तो हम्म, जैसे ही टेम्परेचर हमारे जो इवेपोरेटर होता है, जो आइस बॉक्स होता है, उसमें एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है लाइक -4 और -5। और जब उसके आगे टेम्परेचर जाएगा वो थर्मोकपल सेंस कर लेगा और उस टेम्परेचर को उससे आगे नहीं बढ़ने देगा। Aman, what is a heat pump? How it is different from a refrigerator? My last ये question to you. सर हीट पंप इज अ डिवाइस विच सप्लाइज हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर बाय यूजिंग एक्सटर्नल वर्क डन, and refrigerator is the reciprocal. In that case, refrigerator extracts heat from evaporator and No, uh, refrigerator is also going to pick the heat from low to, and it is going to reject at high temperature. Heat pump is also going to extract heat from low temperature. It is going to reject to high temperature. sir, it in refrigerator cooling effect is produced, but in case of heat pump, heating effect is produced by doing so. So And can the refrigerator work as a heat pump? sir, if we reverse it, it behaves as a heat pump. अगर आपके पास एक विंडो एसी है, फॉर एग्जांपल, Yes, sir. so can it work like a heat pump? सर अगर हम उसका मतलब जो विंडो एसी को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो वो एज अ हीट पंप वर्क Means करेगा। condenser side if you will keep inside the room, condenser side सर कंडेंसर साइड, यस सर, आउटसाइड अंदर कर लगा दे। देंगे तो हीट पंप बन जाएगा। सर शायद अब मेरे को सर ये एक्चुअली रिकॉल नहीं हो रहा ये चीज, बट हम्म, चलो ठीक है अमन, अभी मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। जी सर। देखो, ओवरऑल यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, ओके, यस and सर। your understanding knowledge is also looking fine as यस far सर। as this interview is concerned. JKPSC, they are going to ask you some basic fundamental question, तो यस सर। अंडरस्टैंडिंग है आपका, कंफर्टेबल भी हो आप, थोड़ा सा ट्राई जरूर करना है। जी सर। कॉन्फिडेंस लूज मत करो कि आप एक दो बार ट्राई करके रुक जाते हो कि सर मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, आई मिस दैट। सर एक्चुअली ट्राई, जो एक दो जो टॉपिक थे जैसे ये रेफ्रिजरेटर हीट पंप, इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिवाइज नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था। देखो, अदरवाइज जो अवेलेबल एनर्जी का लॉस होता है ना, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ वर्क, और लॉस ऑफ वर्क को ही इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। अनअवेलेबल एनर्जी तो मिनिमम एनर्जी है, दैट वी नीड टू रिजेक्ट। यस सर। अनअवेलेबल एनर्जी तो कारनोट में भी रहेगी, कारनोट साइकिल में भी 100% एफिशिएंसी नहीं होती, तो अनअवेलेबल एनर्जी तो वहां पे भी रहेगी, जी बट सर। वहां पे लॉस ऑफ वर्क नहीं होगा, मतलब अवेलेबल एनर्जी का लॉस नहीं होगा, मतलब अनअवेलेबल एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। आर यू गेटिंग अमन? जी सर। जैसे एक हीट सप्लाई है उसमें कुछ जो पहले ही अगर हम मेजर कर लें, एक डिसाइडेड होगा कि इतनी अनअवेलेबल एनर्जी रहेगी रहेगी। हाँ, तो मिनिमम एनर्जी को ही आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, बट अगर आप ऑटो साइकिल की बात करोगे, प्रैक्टिकल साइकिल की बात करोगे, तो आपको एनर्जी अनअवेलेबल से ज्यादा रिजेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब जो ओके सर। इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी है, वही क्या है? लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। लॉस ऑफ तो अवेलेबल एनर्जी। लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, और वही क्या है आपका लॉस ऑफ वर्क पोटेंशियल। जी सर। ठीक है, ये वो वर्क था जो, ये वो एनर्जी थी जिसको आप वर्क में कन्वर्ट करना चाहिए था, बट नहीं कर पाए ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटीज। जी ठीक है, जी सर। चलो बाकी आप क्वेश्चन ठीक आंसर कर रहे हो, दो तीन चीजें आपने और मिस की थी, ये हीट पंप, रेफ्रिजरेटर वगैरह। ठीक है, तो एक बार सर अच्छे से रिवाइज कर लो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क नाउ। यस सर। सर आपने बोला था कि प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एनी साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल, तो उसका अब देखो एग्जैक्ट होता आंसर। क्या है अमन, हम आपको मैं कांस्टेंट वॉल्यूम का एग्जांपल पूछूं तो क्या बोलोगे आप? एक रिजिड कंटेनर, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग सम टैंक, यस कोई सर। एयर टैंक है, एलपीजी गैस सिलेंडर है, तो वो क्या है? इट विल बी कांस्टेंट काइंड वॉल्यूम। ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम, यस सर। नहीं? यस सर। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इफ द पिस्टन इज फ्री टू मूव इनसाइड द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, देयर इज नो फ्रिक्शन एंड यू यस आर सर। एडिंग हीट, तो उस यस सर। प्रोसेस को आप क्या एज्यूम कर सकते हो? यू कैन एज्यूम इट लाइक ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यस सर। मतलब you are adding heat in a piston cylinder arrangement and piston is free to move, so that you can approximate it like a constant pressure process. Phase change जितने भी प्रोसेस होते हैं, boiling और condensation, those you can approximate like a isothermal process. ओके सर। अगर कोई बॉडी है जिसको आपने इंसुलेट कर दिया, फॉर एग्जांपल सम सिस्टम इज देयर एंड यू इंसुलेटेड दैट,
that you can approximate like a adiabatic process. Adiabatic process. या थ्रोटलिंग है. थ्रोटलिंग मतलब if a process is the area of the device is very negligible. एरिया नेग्लिजिबल है मतलब उससे जो हीट ट्रांसफर होगा that will also be negligible. Yes, sir. थ्रोटलिंग also you can assume it like a adiabatic because the area is negligible. कोई प्रोसेस है जो बहुत फास्ट है like free expansion, that also you can assume it like a adiabatic. Adiabatic process. तो are you getting, Aman? Yes, sir. रियल में adiabatic थोड़ी ना होते हैं, but we can assume. Yes, assume. We can assume them as a adiabatic. तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में I asked you. ठीक है? Okay, sir. कुछ और पूछना है? ठीक है मन, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल इंटरव्यू. ओके सर, आईसी इंजन और थर्मोडायनेमिक्स 2 सब्जेक्ट्स को अगर अच्छे से कर लूँ तो कर लो हाँ करो बिल्कुल.